young workforce. I'm very happy to introduce very dynamic, energetic leader, role model for many of Rover Rangers and Scout Guide. Madam Puspa Sandla will be there as a day in charge for this webinar to take care of this program. Welcome you, ma'am, and hand over to you. Thank you, sir. The ultimate measure of a man is not where he stands in the moments of comfort and convenience, but where he stands at the time of challenge and controversy. Hello, namaste, and a very warm good afternoon to each and everyone present here with me. I am Pushpa Shandilya, SWB guide from Chhattisgarh. And along with me, I have Mr. Vedadri Sai from Andhra Pradesh. On this auspicious occasion of our 15th webinar, I heartily welcome all of you too. Upskilling our nation's young workforce, skilled youth, nation pride, that is today's topic, proficiency batch cook. Over to Vedadri. Thank you so much, ma'am. So first of all, uh, I request everyone stand up for general salute. Salute. जैसे थे. Please be seated. Now, so let's invoke the blessings of Almighty for the smooth connect of this webinar. I now request all of you to kindly raise up for PSG prayer. दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ज्ञान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना. Thank you, everyone. Please be seated. Yes. So, for the opening ceremony of the webinar 15, and to welcome our today's very respected speaker, our beloved dignitaries, and our lovely viewers who have joined us to make it a grand success, I cordially invite our Mr. Analendra Sharma sir, Assistant Director, Northeast Region, for welcoming address. Sir, please. Thank you, Vedadri. Am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Please continue. Very good evening to one and all. We are here in the 15th episode of the series of upskilling our nation's young workforce with the theme Skill Youth Nation's Pride. I here put the words of our Prime Minister Narendra Modi ji. The more we give importance to skill development, the more competent will be our youth. I repeat again, the more we give importance to skill development, the more competent will be our youth. Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, dream to get a skill India.
Very good evening, one and all. Honorable, our Executive Director, Mr. Krishna Sami sir, most respected today's resource speaker, Mr. Prashant Sibaji Gaikwad, leader trainer scout from Maharashtra, all the team members of BSD for Skill Youth, all attendees in Zoom as well as the viewers in YouTube channel of Bharat Scout and Guide. I feel privileged to welcome all of you on behalf of National Headquarters, Bharat Scout and Guide. I extend hearty welcome to all the office bearers of Bharat Scout and Guide who connected with us now. Respected Director, Bharat Scout and Guide, all the National Headquarters professionals, most respected Mr. Krishna Sami, our Executive Director, who is here with us today to encourage our young people. Most respected Mr. Prashant Sibaji Gaikwad, leader trainer scout and retired principal from Hassenberg School of Maharashtra. Welcome you, sir. All the state officials, trainers, unit leaders who connected in this call, all attendees and viewers in our YouTube channel of Bharat Scout and Guide. I, on behalf of National Headquarters, welcome you all. I also extend hearty welcome to all the team members of BSG for Skill Youth. They in charge, Madam Pushpa Sandella, Master of Ceremony, Mr. Bedad Desai. One more Master of Ceremony is going to be joined with us, Madam Antika Kundu. The backbone of digital events, our IT team, and the team who working behind always to make all the webinars successful. Skill India is a dream of our Prime Minister Modi ji. The same way our Honorable President of Bharat Scout and Guide, Dr. Anil Jain, sir, and Honorable Chief National Commissioner, Bharat Scout and Guide, Dr. K.K. Khandewal ji, seem to see a very young, strong team of Bharat Scout and Guide who can contribute to nation's building. And upskilling our nation's young workforce is one of the aspects of their vision. The series of webinar has started since 8 December 2021 on every Wednesday from 4 to 6 p.m. to motivate a large number of youth to take up skill development training. The training will focus on how to something specific and result in a learned skill that can be put into immediate use to become a self-reliant. That is 21st century skills, proficiency basis, and career counseling. First phase of the series going to conclude in the end of this month. We plan to celebrate the success of 70 webinars of this series in the first week of April 2022. Here I appeal to all the attendees who regularly attended our webinars to give their feedbacks. Already a Google form developed to get your feedback. We could not connect all the members during this limited time, so we selected actively participate members. Today, Madam Vijaya Deka with us to give feedback. And last webinar, we got Mundala Sharmaji to give feedback on this webinar. We request all the attendees and viewers prepare a video and upload in the Google link, which can be played in our closing ceremony of this first phase of webinar. Today, we are going to have our webinar 15 of this series on proficiency based POO.
And cooking is a basic need and art for every scouts and guide. And we're very lucky to have a right speaker on the topic. Hope our members will benefit with this webinar. Enjoy this webinar with this few words. I again conclude this welcome address with the words of Robert Greene, an American author. Future belongs to those who learn more skills and combine them in a creative way. Repeat again. Future belongs to those who learns more skills and combine them in a creative way. So I hope that all our attendees, all the members of BSG will use the skill in a creative way. Thank you very much. Thank you to all of you. Thank you very much, sir, for welcoming everyone, and we too welcome you too for this webinar. So, with this, now I invite our most respected, dynamic, and more cooperative leader, our Executive Director, Mr. Krishnaswamy, sir, PSG India, Executive PSG India, for his opening remarks. Sir, the virtual stage is yours. Good evening to all. Dear Anlendra Sharmaji, the assistant of our Northeastern region coordinating the webinars. Field, who is an action-oriented leader trainer, having experience of conducting Himalaya Woodbird courses at our National Training Center, and also a person got direct contact with his units, Sri Prashant Gaikwadji, to have as the resource speaker for this webinar. As our Assistant Director Anlendra Sharmaji has told, the number of skills that we learn, or the more number of skills that we learn, is really an asset. Those days, when we were going to colleges, the computer was something which you can only see. You cannot go nearby it, you cannot touch it. And people, those who had that skill of operating it, were treated as very enthusiastic and energetic people who ventured into learning new skills. But people never thought that when there will be an emergency, the basic needs of food, shelter, sanitation is also that important. What Baden Powell has taught the young people through camping and scouting. The proficiency badge today, what Prashantji will be discussing with us, is the most essential life skill for each one of you and each one of us, so that we will be able to survive. Recently, one of the Indian news channels telecasted a small operated in the water and which is totally operated. So this person was asking the manager, do you believe that if a call comes and you want to send the need materials to a particular place, how you will send it? He responded that we will call a scout unit leader or a scout unit in that area, and we will ensure that these materials will reach. That means the scouts of Ukraine are in a network for many years. They know what are the corners of their country and they can reach out to some place. Let us ask ourselves, are we strong enough to know about our own basic food that we get from our mothers from the kitchen? We may have fancy of having some kitchen food sometimes, but that is not important. What food we should eat, what is the best food that can give us
all that elements need to survive and protect ourselves. Scientifically, they call it carbohydrates, proteins, minerals, vitamins. So every cook should know in my ingredient minimum what are needed. As a open air living again, we should work out in camps, we should go for hikes. So basic should be how we survive ourselves with minimum food, the best food. Baden Powell gave so many ideas of even carrying the ration in the ration bags. So for last 120 years, scouting is very strong with regard to looking after oneself. This proficiency badge, cook, address at how each one of us will be able to know the basic food needs and how to manage the food. And at the end, I would like to tell, even the proficiency badge, this was displayed wrongly at several times because people thought that the single pipe like making is the funnel through which smoke will go out, so it should be up. Several APRs were wrongly. The emblem used for the cook badge is a hand grill. The area with so many lines is the grill on which you can put your bread or any vegetable and keep it above a barbecue and hold the other side as a handle and cook it. So that is why the handle is downwards. Many people not even know that how to wear a badge. So these webinars are really addressing why and how of each and every proficiency badge. But those who are attending this webinar, my request is, all your friends may not be good in English. So whatever you learn here, you try to put it in your regional language, share it with your friends, and also make a menu for your area which will be more suitable for a scout camp. So I thank Anlendarji for calling me to make the keynote address. I have full faith if you attend this workshop fully, Prashantji will be able to give you the why, how and why of the proficiency badge, the cook, in the perspective of a scout who look cooking as a life skill. That means till the end of our last day, we should remember what is the use of this proficiency. Thank you all. Yeah, thank you so much, sir, for your presence over here. Really, we felt it's a glad moment for us. Your presence made us all very happy for this, sir. And next, it's time to welcome our resource speaker of today's webinar, very respected Mr. Prashant, sir, leader trainer scouts, to give plenary session on proficiency badge book. So before that, let me take a moment to introduce him. Mr. Prashant, sir, is a retired principal from Higher Secondary School of Maharashtra. He started scouting in 1984. Served the movement with various capacity like district trainer, training commissioner, effective trainer, and unit leader. So he kept interest in signaling, ham radio communication, mapping, artificial training, good handwriting, camping, playing mouth organ, singing, and whatnot, and so many. So good numbers of boys completed Raj Puraskar and Rashtrapati under his guidance. So I heartily welcoming you, sir. So the virtual stage is yours. Thank you. Thank you, all of you. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay, thank you. So, यहाँ पे सभी को वेलकम किया गया है और मेरी तरफ से भी आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ और ये तो अनिलेंद्र जी ने पहले से डिसाइड करके रखा था कि एक प्रोफिशिएंसी बैच आपको
यहाँ पे देना ही है, आपको यहाँ पे बोलना ही है उस बैच के बारे में। तो चलिए हम आप आज के प्रोफिशिएंसी बैच के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। कैन आई शेयर माय स्क्रीन? Sure, sir, sure. यस, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि प्रोफिशिएंसी बैच किस लिए हम हमारे स्काउटिंग लाइफ में, गाइडिंग लाइफ में या कब बुलबुल के लाइफ में हम देते हैं। ये प्रवीणता बैच जो होता है उसे दक्षता पदक भी कहते हैं। यह दक्षता पदक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी प्रोफिशिएंसी बैच जो होता है वो हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में प्रोफिशिएंसी बैच एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं। इट इज वाइडन योर नॉलेज। जो जानकारी हम बचपन से रखते हैं या जो जानते हैं, जो सीखते हैं बचपन से, उस जानकारी का विकास करने के लिए और जानकारी बढ़ाने के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए हमें दक्षता पदक यानी प्रोफिशिएंसी बैच बहुत ही फायदेमंद है। कोई स्काउट और हमारे जो बच्चे होते हैं, स्काउट गाइड जो होते हैं, वो स्किलफुल होना चाहते हैं, कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, आगे चल के जिंदगी में बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छी जगह पे अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो उनके लिए भी ये प्रवीणता बैच जो होते हैं, प्रोफिशिएंसी बैच जो होते हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं उनके जीवन में। लेकिन ये प्रोफिशिएंसी बैच आगे चल के आपको कुछ अर्निंग भी देते हैं, आपके लिए आप कुछ कमा भी सकते हैं उसके ऊपर। जो बचपन का जो आपका इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से अगर आप प्रोफिशिएंसी बैचेस पे काम करोगे तो जल्द ही ये प्रोफिशिएंसी बैच आपके अगले जीवन में ये आपका करियर भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी डायरेक्टर साहब ने भी बताई कि बी प्रिपेयर टू हेल्प। प्रोफिशिएंसी बैच का सबसे पहला महत्वपूर्ण मकसद ये है कि प्रोफिशिएंसी बैच लेने के बाद और हम मेरे यूनिफॉर्म पे लगने के बाद मैं उस तरह की सेवा देने के लिए सक्षम हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ मेरे सभी भाई बहनों को और मेरे समाज को। तो जब कोई प्रोफिशिएंसी बैच हम यूनिफॉर्म पे लगाते हैं तो हम सक्षम होते हैं, उस बैच के बारे में जानकारी रखे हुए होते हैं और उस तरह की कोई सेवा हमें देने की बात आती है तो हम आगे जाते हैं। ये बैच के बारे में अभी बताया गया कि ये बैच क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में पहले भी कुछ वेबिनार हुए, उसमें इस बैच का कोई संबंध था, कुछ चीजें वहां पे भी बताई गई थी। लेकिन क्यों ये बैच क्यों लेना चाहिए उसके बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो जिंदगी में मैं कुछ करना चाहता हूं तो उसी हिसाब से मैं कुछ आजकल जो भी मैं कर सकता हूं तो वो प्रोफिशिएंसी बैच का काम है। तो मुझे प्रोफिशिएंसी बैच उसी तरह से मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना चाहिए। स्काउट मास्टर मुझे जब बताएगा, जब बैच बताएंगे, तब मैं उनमें से मेरे इंटरेस्ट का बैच चुनूंगा, क्योंकि ये बैच का जो काम करूंगा मैं वो मेरे मुझे खाली समय मेरा अच्छी तरह से बिताने के लिए मुझे काम आएगा। कोई स्किल अगर प्रोफिशिएंसी बैच से मिलता है तो उस स्किल के लिए हमें वैसा ही प्रोफिशिएंसी बैच, दक्षता पदक हमें चुनना चाहिए। अगेन और मोटो इज बी प्रिपेयर्ड। तो हमें तैयार रहना है किसी भी हालत में, किसी भी
परिस्थिति में काम करने के लिए और हमारे प्रोफिशिएंसी बैच का जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। हेल्प, हम दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि हमारा मोटो जो है वो दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों की मदद के लिए ही है। तो मदद करनी है तो हमारे पास कुछ तो भी चाहिए, और वो स्किल जो है वो प्रोफिशिएंसी बैच से आता है। आगे डेवलपिंग करियर, आगे चल के हम कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए भी शुरुआत जो है वो प्रोफिशिएंसी बैच से ही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ रिलायंस, जिसमें एक कुक बैच आता है कि अगर आप सेल्फ रिलायंस है तो कुकिंग अपने लिए, खुद के लिए खाना बनाने आपको खुद को आना चाहिए। तो ये चीजें होती है कि क्यों बैच हमें चुनना है, क्यों प्रोफिशिएंसी बैच करना है। हमें कंपलसरी कुछ बैच दिए गए हैं द्वितीय सोपान से लेकर आगे तक, लेकिन वो भी करना है और भी कुछ बैच कमाना है हमें, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। कैसे करना है? अभी कोई भी प्रोफिशिएंसी बैच अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो तो इस तरह से कुछ चीजों पे ध्यान देना है। पहले तो आपको प्रोफिशिएंसी बैच जो है वो आपको चुनना पड़ेगा, आपको खुद को चुनना पड़ेगा, और आप खुद जो बैच चुनेंगे उसके ऊपर आपको अपने यूनिट लीडर जो होंगे, अपने गाइड कैप्टन, स्काउट मास्टर, कब मास्टर, फ्लॉक लीडर्स, वो जो होंगे वो आप पे आपको गाइडेंस देंगे। उसके बाद आपको परमिशन लेना है, किससे? अपने माता पिता से। अपने माता पिता को भी बोलना है कि मैं ये बैच के लिए काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद अपने पेट्रोल में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपकी कोर्ट ऑफ ऑनर होती है उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उनके सामने प्रपोजल रखना पड़ता है कि मैं ये बैच के लिए काम करना चाहता हूँ। तो आपको इस तरीके से अपने बैच के लिए काम शुरू करने से पहले इतना सब कुछ थोड़ा थोड़ा चीज करके आपको आगे बढ़ना है। अगर सभी परमिशन आपको मिल जाती है तो उसके बाद आप उस बैच के लिए काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए भी टाइम लिमिट होगा। आपने कौन सा बैच चुना है और उसके लिए कितना समय लेना है वो आपके बैच के ऊपर निर्भर है, और उसमें जो काम करना है उस काम के लिए लगने वाले समय के ऊपर निर्भर है। तो आपको वो डिसाइड करके अपना काम शुरू करना है। आप जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी रखनी है आपको। तो जानकारी रखने के लिए आपको एक बुक बनानी पड़ती है जिसे लॉग बुक बोलते हैं। लॉग बुक तो सभी बनाते हैं। तो लॉग बुक बनाने के बाद आपको उस बैच के लिए जो आपने काम किया है वो उसमें रिपोर्ट के तरीके से लिखना है। उसके बाद सबसे अच्छा काम होता है और सबसे बढ़िया काम होता है कि उस बैच से रिलेटेड जो एग्जामिनर होगा उसके पास आपको जाके उसकी एग्जाम देनी पड़ेगी। उस बैच के लिए जो एग्जामिनर आपने चुने होंगे, खुद भी चुन सकते हैं, आपके यूनिट लीडर भी चुन सकते हैं। तो वो एग्जामिनर आपको बुलाएगा या आप उसके पास जाएंगे और इस बैच के लिए जो काम किया है उसको दिखाएंगे। वो जो कुछ सवाल पूछेंगे उसके जवाब देंगे, और वो जो कुछ एक्टिविटी बताएंगे वो भी आप करके दिखाएंगे। अगर सेटिस्फाइड होता है एग्जामिनर तो आपको वो सर्टिफिकेट दे देगा। तो आपको बैच के लिए अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपका बैच जब आएगा तो एक छोटा सा सेरेमनी होगा अपने स्कूल में, अपने यूनिट में। उस सेरेमनी में आपको वो बैच सम्मान पूर्वक प्रदान किया जाएगा, तभी आप वो बैच लगाएंगे। और बाद में यूनिफॉर्म पे जो जगह निश्चित की गई है जहां पे लगाना है वहां पे आप लगाएंगे। कोई भी प्रोफिशिएंसी बैच जब आप लगाएंगे अपने यूनिफॉर्म पे तो आप मोटो के लिए सही तरीके से प्रिपेयर होंगे, क्योंकि बी प्रिपेयर्ड ये मोटो जो हमारा है ये प्रोफिशिएंसी बैच के हिसाब से ही है। साइड में आप एक पिक्चर देख रहे हैं, वो जो बच्चा है उसका एक बहुत अच्छा फिल्म भी है, जरूर आप देख लीजिए। तो आपको प्रोफिशिएंसी बैच क्या होता है, कार्टून फिल्म है, लेकिन आपको उस प्रोफिशिएंसी बैच के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उस फिल्म से भी मिलेगी। चलिए बताइए कि आपको आपके स्क्रीन पर कौन दिखाई दे रहे हैं।
चलो चैट बॉक्स में जाइए और बताइए कि ये व्यक्ति कौन है। चलिए ओनली 1 मिनट, देखते हैं। वेरी गुड। आपके स्क्रीन पे जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? क्या आप उनको जानते हैं? तो उनका नाम बताइए या उनका प्रोफेशन भी बता सकते हैं। एनीवन? Is there any response? I dream. Yes, sir. Lot many response from there. Yeah. Save Sanjeev Kapoor, many of telling us. Yes. Good, good. तो चलिए आपने जो आंसर बताया वो देखते हैं सही है या आप कितनी जानकारी रखते हैं। यस, ही संजीव कपूर, द वर्ल्ड नोन शेफ, इंडियन आदमी है और इनके बहुत से जो कुकिंग जो वो करते हैं, उनके बहुत से जो रेसिपी है वो फेमस हो गए हैं और इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, वो शेफ है और उन्होंने बहुत सी जगह पे अपना जो ये है हुनर जो है वो दिखाया है। ये जो वेबिनार जो हो रहा है कुकिंग पे, उसका थोड़ा सा मैं पर्पस बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि सिस्टमैटिक वर्किंग क्या होता है, कि कोई भी बैच आप जब लेते हैं तो उसके लिए जो एक्टिविटी करते हैं, जो वर्क करते हैं, वो किस तरह से होनी चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा है प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटी। जो बैच में दिया हुआ सिलेबस होता है उसमें इंफॉर्मेशन पार्ट कौन सा होता है और एक्टिविटी पार्ट कौन सा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। देन जो एक्चुअली सिलेबस है, उस सिलेबस को लेके हमें सिर्फ उसकी जानकारी वर्कबुक में, अपने लॉगबुक में लिखनी है या कुछ काम भी करना है, या काम करना है तो काम का जो रिपोर्ट है वो कैसे लिखना है, उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। कोई भी बैच जो होता है, कोई प्रोफिशिएंसी बैच जब हम उसके लिए काम करते हैं तो हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनसे हमको मदद लेनी पड़ेगी और एग्जामिनर भी हमको चुनना पड़ेगा। मैं एंड में पूछने वाला हूं आपसे कि आप कुकिंग बैच के लिए, कुक बैच के लिए कौन सा एग्जामिनर प्रेफर करेंगे। देन बैच आपको अर्न करना है, बैच आपको कमाना है, बैच आपको सिर्फ लेना नहीं है और अपने यूनिफॉर्म में छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए अर्निंग क्या होता है, कोई भी चीज अर्न करनी हो तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, कष्ट देना पड़ता है, शरीर को भी मन को भी। तो वो अर्निंग कैसे होता है, और एक बैच हमें मिलने के बाद हमें दूसरे बैच की तरफ जाना है और नेक्स्ट बैच के लिए भी हमें काम करना है। तो एक बैच अगर हम सही तरीके से सिस्टमैटिकली करते हैं और वो बैच हमें प्राप्त होता है तो हमें आगे जाके दूसरे बैच के लिए भी काम करना है। तो चलिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो बैच का चित्र है वो है कुक प्रोफिशिएंसी बैच, जो कब बुलबुल और स्काउट गाइड के प्रोफेशन में है। हम थोड़ी जानकारी के लिए एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। Am I audible? Yes, sir. Yes. तो किसी भी एज में आप कुकिंग कर सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है। लेकिन ये कुकिंग खुद के लिए कर रहे हैं कि हेल्थ को आदर कर रहे हैं, मालूम नहीं, हम देखेंगे आगे चल के।
बहुत ही गौर से आप देखिए कि उसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरह से हो रही है। अभी वो क्या बना रहा है देखो, किसी की भी हेल्प नहीं ले रहा है, खुद ही सब कुछ काम कर रहा है। गौर से देखिए। और अभी देखिए उसका जो मकसद था वो ये था। ओके, डू यू लाइक द वीडियो? आई थिंक यू लाइक इट। तो हम चलते हैं कब बुलबुल के प्रोफिशिएंसी बैच के सिलेबस की तरफ। ग्रुप 4 में सर्विस सेक्शन में ये सिलेबस दिया गया है। नो द सिंपल फायर प्रिकॉशंस, बी एबल टू ले एंड लाइट अ फायर इन ओपन, कुक राइस और चपाती, दाल और वेजिटेबल्स, फ्राई और पोच एन एग, और प्रिपेयर खिचड़ी और दलिया। ये आपका कब और बुलबुल का छोटा सा सिलेबस है। कब बुलबुल के जो बच्चे हैं उनके एज के हिसाब से ये कुछ दिया है। उनको फायर प्रिकॉशन क्या होती है, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो देना है, और उनको ओपन में फायर जलाना भी आना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो हम पहले देखेंगे कि उस वीडियो में हम पता करेंगे कि फायर कैसे जलाते हैं। A good campout deserves a good campfire, but not every fire is built the same. We're going to go over 3 common ways to arrange the wood so your campfire goes up in flames. Make sure you always use a designated fire ring that's well away from any flammable grasses or trees. Be sure to check your campground's regulations, especially those about gathering firewood. To build any type of fire, you'll need 3 types of fuel: tinder, kindling, and fuel wood. Tinder is anything that catches fire quickly. Dry bark and leaves or pine needles are great natural options. Homemade options like dryer lint or cotton balls coated in petroleum jelly also work. You can also use store-bought fire starters. Kindling consists of small sticks. Common and quick campfire to build is the teepee. It lights easily and doesn't need a lot of wood, but you'll need to tend the fire more than the other options. Put the tinder and small kindling in the middle and build a cone of smaller logs around it. Once the fire is going strong, you can gather the wood and embers and throw on some larger logs. Be careful not to smother the flames.
One of the nice things about the log cabin technique is that you can get a relatively big fire going pretty quickly. You don't have to tend it much, and you'll end up with some space in the middle for airflow for the tinder and kindling. Now add a couple more layers with some slightly smaller logs. When the structure is ready, add some more tinder and kindling and light it up. When the fire has burned down a bit, you can gather the coals into a pile and add more wood. An upside-down fire, also called a pyramid, is a great option for when you want a long burning fire that doesn't need much tending once it gets started. Lay 4 or so of your largest logs on the bottom, with as little space between them as the smallest pieces on top. Now, pile your tinder and kindling on the top of the stack and light it up. Once the fire gets started, it will slowly burn through each layer of logs, and you'll be able to enjoy the fire for hours without having to add more wood. When you're ready to put out your fire, pour some water on the embers and stir them around. Remember that you don't want to leave the fire until the ashes are cool to the touch. Keep adding water and stirring, but be careful not to flood the fire ring. You may want to build another fire soon. To learn more about camping and backcountry fires, click here. Or check out these videos. तो ये है जानकारी रखनी है हमें, फायर जब जलानी है तब किस तरह से जलाई जाती है और कितने तरीके होते हैं कैंप फायर के लिए या हमारे फूड के लिए जो फायर हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। तो कुछ टिप्स है आपके लिए कि जब हम कपल की बात करेंगे, छोटे बच्चों की बात करेंगे, तो उनको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी अपने जब फायर जलाएंगे तब। तो सबसे पहले है कि कोई भी इन्फ्लेमेबल थिंग जो है वो नजदीक नहीं रखनी चाहिए। हमारी जो आग जहाँ पे जल रही है वहां पे ज्वलनशील वस्तु जो होती है वो दूर रखनी चाहिए। उसमें कागज हो सकता है, कुछ तरल पदार्थ होते हैं रॉकेट के जैसे, और इन्फ्लेमेबल थिंग जो होती है वो जलाऊ लकड़ी भी वहां से थोड़ी सी दूर रखनी चाहिए। जो सूखी हुई लकड़ी होगी वो थोड़ी सी दूर चाहिए। देन सबसे महत्वपूर्ण है, डू नॉट लीव फायर अनअटेंडेबल। आपको आग को छोड़ के, आग जलती हुई छोड़ के आपको कभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आग कहीं भी धोखा कर सकती है, कहीं भी आग और जला सकती है। तीसरी बात है, हैंड टूल्स मस्ट बी रेडी। आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि जो आपको अपने हाथ से काम करने के लिए, आग से बचाकर हाथ से काम करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। जैसे पोकर होता है, चिमटा होता है, किसी धातु का बर्तन होता है जो आपको आग से थोड़ा सा बचाए, और थोड़ा सा आग से दूर रहने के लिए आपको बीच में किसी चीज के पीछे भी बैठना पड़ेगा, तो आपसे जलन नहीं होगी, आपको आग से जलन कम होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये अग्निशामक यंत्र जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, वो भी अगर आप रख सकते हैं वहां पे तो आप जरूर रखिए। देन अवेयर योर हेयर एंड क्लोथ्स। आपके बाल जो होते हैं अगर बड़े हैं और वो तो उनको बांधना चाहिए, और आपके कपड़े भी ढीले हैं तो उनको भी आपको बांधना चाहिए। एक वाटर बकेट आप साइड में रखिए। वो वाटर बकेट आपको कभी भी इस्तेमाल करनी पड़ी या कुछ जलन हुई, हाथ जल गया, तो आपको पानी में हाथ डाल के और आग को शांत करने के लिए भी उस पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फर्स्ट एड किट, एक छोटा सा फर्स्ट एड पर्सनल किट जो होता है वो आपको वहां पे रखना ही है, क्योंकि कोई भी वहां पे कुछ का हादसा होता है तो उसको जल्दी से तुरंत ठीक करने के लिए आपको ये फर्स्ट एड किट इस्तेमाल करने आएगा। देन कभी भी पहले जो एरिया है, जिस एरिया में आप आग जला रहे हैं, वो एरिया आपको सुपरवाइज करना है, अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है। आसपास कुछ ना हो, कोई बाढ़ ना हो, कोई पेड़ ना हो, कोई ऐसे बुशेस ना हो, जलने वाली चीजें नहीं हो, ओपन में उसको थोड़ा सा दूर लेके हमें ओपन में आग जलानी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विंड फ्लो। आग जब हम खुले में लगाते हैं तो हवा किस तरफ जा रही है,
उस तरीके से आपको आग को जलाना पड़ेगा। जिस तरफ हवा जा रही है उसके सामने आपको आपकी जो फायर प्लेस है वो रखनी पड़ेगी और वहां बैठ के आपको सामने बैठ के आपको आग जलानी पड़ेगी। तो आपके दोनों तरफ से हवा अंदर जाएगी और जो आग है वो जल जाएगी। अभी हम जाते हैं कि आपका जो सिलेबस में जो बताया है उसकी तरफ। तो सबसे महत्वपूर्ण खाना जो खाने में जो चीज होती है वो चपाती। चपाती बनाना सबको आता है, चपाती भुनना सबको आता है, सबको सेकना आता है, लेकिन चपाती का जब जो फ्लोर होता है वो गूंथना पड़ता है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जिसमें 2 कप आटा होता है या व्हीट फ्लोर होता है, वाटर होता है और थोड़ा सा ऑयल भी होता है। तो चलिए हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज कैसे की जाती है। आटा अगर आपको गूंथना है तो जितनी चपाती आप बना रहे उसी हिसाब से आटा लेना पड़ता है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी, इसमें संयम बहुत जरूरी है, डाल के आपको वहां पे आटा गूंदना शुरू करना पड़ता है। जैसे आप पानी बढ़ाएंगे वैसे आटा बहुत ढीला या बहुत गीला हो जाएगा, तो आपको वो उसी हिसाब से पानी डालना पड़ता है। यहाँ पे एक माँ ही दिखा रही है कि आटा कैसे गूंदा जाता है। देखिए पानी मिलाने के बाद कैसे आटा जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद वो गोले की शक्ल लेगा और धीरे धीरे एक गोला बन जाएगा। पहली बार जब मैंने आटा गूंथा था तो मेरे दोनों हाथ दिख गए थे और दोनों हाथों को ये सब फ्लोर लगा था। तो इस तरह से ये आटा गूंथा जाएगा। इसके बाद हमें उस आटे को ऑयल लगा के थोड़ा सा तैयार करना है चपाती के लिए। वेरी गुड। इसके बाद हमारा मेन काम शुरू हो जाएगा। चपाती के छोटे छोटे चपाती के लिए गोले बनाएंगे। गोलों को भी आटा लगाया जा सकता है क्योंकि वो ना चिपके उसके ऊपर। और बेलन और एक पतला सा लकड़ी का जो पार्ट होता है उसको पार्ट बोलते हैं, हम पोल पार्ट बोलते हैं, पोड़ी पार्ट बोलते हैं। वो लेके हमें चपाती बिल्कुल राउंड उसको करना है, रोल करके। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि रोटी गोल आए। हमेशा तो हम जब बनाते हैं तो किसी न किसी देश का नक्शा ही तैयार हो जाता है, आपको मालूम है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे और आप भी कर सकते हैं ये काम। गुड।
हाँ, यहाँ पे एक बात है कि रोटी यहाँ पे गैस पे बनाई जा रही है। हमें वो रोटी ओपन एयर में या अपने जो फायर जो ओपन एयर पे लगाएंगे आप उस पे बनाएंगे। आप तो किस पे बनाएंगे आप सोच के रखिए कि अगर मैं ओपन में हूँ, कैंपिंग में हूँ, तो मैं रोटी के लिए ये सब लेके जाऊंगा वहां पे, या फायर जला के रोटी बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस देना है और बताना भी है कि हम वहाँ पे भी रोटी बना सकते हैं। और बहुत से स्काउट्स बनाते भी है जब कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो ये हुआ चपाती के लिए आपका जो तरीका था चपाती बनाने का। घर में रोज चपाती बनती है, और जब चपाती बनती है और जब माँ उसको सेकती है तो हमें उसकी बास आती है बाहर के रूम में। हम जब पढ़ाई करते होते हैं तब उसकी बास आती है तो हम चिल्लाते हैं और जल्दी से हमारी भूख भी बढ़ती है और हम दौड़ के जाते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन कुछ ब्रेकफास्ट के लिए आपको करना है तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये है पोच एन एग। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। Life could be a dream. Life could be a dream. Gonna mix poached egg. It's quite easy actually, not rocket scientist. What you need is the saucepan, turn on the high heat, and we add some water, and then we're gonna add some vinegar. There are 3 tablespoons of vinegar. Now, when you see the water start boiling up, turn it to a low heat. What you need is using a spoon to stir the water in the same direction. And then we slide the egg into the middle of the saucepan, and we're using a table knife to stir the water from the side. Make sure the egg stays in the middle when it's cooking. And you can see the egg actually forming the round shape. That's a good sign what we need, okay? Keep stirring the water for another 2 and 3 minutes. Now it's the time we turn the heat to medium. But make sure they are not boiling because the egg actually still raw inside. As you can see, the egg's not ready. You can take it out. Life could be a dream. Life could be. जस्ट अ मिनट। तो ये हुआ हमारा पोच एन एग। एक तो हम एक तो खाते हैं हम, लेकिन फ्राई करके ज्यादा खाते हैं। जिनके यहाँ नॉनवेज होता है वहां पे खाते हैं। लेकिन एग को अगर जब आप ऐसे पोच करके खाएंगे तो वो ज्यादा पौष्टिक रहेगा और आपको सभी प्रोटीन्स मिलेंगे। जलाने के बाद या फ्राई करने के बाद उसके बहुत से प्रोटीन टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके बाद सबके घर में बनने वाला और सबसे बढ़िया जो ज्यादा खाया जाता है वो है खिचड़ी। और खिचड़ी हम देखेंगे कैसे बनती है। खिचड़ी के लिए हमें मूंग दाल की खिचड़ी अगर हम बना रहे हैं तो इस तरह से आपको दाल और चावल, मूंग दाल और चावल का एक मिश्रण लेना पड़ेगा और उसमें पानी डालना है। हमें कितना पानी डालना है कि हमारे हाथ की जो बीच वाली उंगली होती है, बड़ी उंगली, उसी हिसाब से उसके जो लाइन होते हैं उस लाइन के हिसाब से यहाँ तक आपको पानी डालना है। तो पानी आपको डालने के बाद उसका पानी का जो लेवल है उसको आप चेक करना है कितना हुआ है। उसके बाद उस खिचड़ी को हमें अपने फायर पे रखना है, गैस पे रखना है या चूल्हे पे रखना है और उसको उबालना है। उसको उबालने के बाद ये पानी कम होते जाएगा। पानी कम होने के बाद जब पानी पूरा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब हमें उसके ऊपर ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगाने के बाद उसको सुखा देना है, गैस बंद करना है। उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद पूरा चावल जो है तो पक जाएगा और हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब जल्दी में हम होते तो कैंपिंग में हम अगर कहीं पे हाइक पे जाना चाहते या बाहर जाना चाहते, कैंपिंग साइट छोड़ना चाहते तो जल्दी से खाना बनाना है तो खिचड़ी एक बहुत ही अच्छा
एकदम साधन है, वो जो रेसिपी है जो हम बना सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, जो आपने चुना है, जो करने का तरीका चुना है, या जो चीज़ें आपने चुनी है, उसकी जो रेसिपी है वो आपको आउटलाइन बुक में रखनी है और उसकी प्रोसीजर भी लिखनी है। चलिए हम बोलते हैं स्काउट गाइड के प्रोफिशिएंसी बैच की तरफ। स्काउट गाइड का जो कुक का प्रोफिशिएंसी बैच है वो भी इस तरह से है, और वहां पर भी हमें कुछ बताया गया है एपीआरओ में। एपीआरओ में दो चीजें बताई है, कुक प्रोफिशिएंसी बैच जैसे बताया गया है वैसे कुकिंग भी बताया गया है। आप द्वितीय सोपान का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे तो वहां पे कुकिंग है, वो कुकिंग कंपलसरी एक्टिविटी में है, आपको वो करनी ही है। अगर आपको द्वितीय सोपान पूरा करना है तो आपको ये करनी पड़ेगी। द्वितीय सोपान में टेस्ट नंबर 10 देखेंगे आप, तो वहां पे 1 प्रोफिशिएंसी बैच आपको सिलेक्ट करना है, एक प्रोफिशिएंसी बैच आपको सिलेक्ट करना है। वो प्रोफिशिएंसी बैच का जो लिस्ट है वहां पे कुछ प्रोफिशिएंसी बैच है, उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वैसे तृतीय सोपान में भी हमारा जो टेस्ट नंबर 10 है वो भी कंपलसरी। वो क्या है? बैकवुड्समैन कुकिंग, जो कैंपिंग में हम जल्दी में इस तरीके से और बिना बर्तन के कर सकते हैं। बिना बर्तन के बैकवुड्समैन कुकिंग के बारे में हम फिर कभी और जानकारी लेंगे। तो ये बैकवुड्समैन कुकिंग जो है वो भी आपको कंपलसरी है, क्योंकि आपको बिना बर्तन से बहुत कुछ बनाना आता है। तो ये बहुत फेवरेट होता है स्काउट गाइड में, ये बैकवुड्समैन कुकिंग का। लेकिन आजकल बैकवुड्स रहे नहीं, हमारे घर के पीछे या आमने सामने कहीं पे भी जंगल नहीं रहा। तो हमें कैंपिंग के लिए जब हम जाते तभी नदी के किनारे बैठ के या जंगल में आप ये कर सकते। तो चलिए, कुक प्रोफिशिएंसी बैच स्काउट का जो है एपीआरओ पार्ट 2 और 3 में नंबर 26 पे जो बताया गया है वो यहाँ पे आपको हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पे 2 बैच दिखाए गए हैं, एक बैच का बैकग्राउंड व्हाइट है और दूसरा थोड़ा ग्रे। तो ये स्काउट और गाइड अलग अलग बैच होते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड जो होता है वो गाइड के लिए होता है और ग्रे बैकग्राउंड जो होता है स्काउट के लिए होता है। ये अपना सिलेबस, ये सिलेबस में 5 चीजें हैं, वो चीजें आपको उसके ऊपर काम करना है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आगे चलता हूँ। पहली चीज, नो द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के लिए कौन कौन से नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है वो आपको इसकी जानकारी लेनी है, इंफॉर्मेटिव पार्ट है ये। तो इसके पहले भी जो 2 वेबिनार हुए, एक वेबिनार हुआ है हेल्दी मैन का, एक वेबिनार हुआ था, और दूसरा न्यूट्रिशन एजुकेटर बैच का वेबिनार हुआ था। तो दोनों बैच में आपको बैलेंस डाइट के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी दी गई, इसलिए मैं ज्यादा उसके तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक सिर्फ एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो ईट वेल होगा, आप जो खाना खाएंगे वो क्या होगा, कैसे होगा। तो ये इस तरीके से बताया गया है कि आपकी थाली कैसे हो। इसमें महत्वपूर्ण बात इधर दिखाई है, ऑयल एंड स्प्रेड्स जो बच्चों को ज्यादा पसंद होता है, वो उसका पार्ट कितना कम है देखो, और सबसे ज्यादा पार्ट जो होता है सब्जियों का होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान नहीं रखनी है कि इंग्रेडिएंट्स जो हमारे होते हैं जिससे बैलेंस डाइट बनता है, वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स रोज के खाने से हमारे शरीर में जाने चाहिए। ये हमारा खाना होता है, इस खाने में सभी इंग्रेडिएंट्स आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, वो सभी आना चाहिए, और तभी हमारा खाना पूरा बनेगा। हम कुछ भी टाइम के हिसाब से नहीं, अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे मेरा एग्जाम देना है, मेरा ऑनलाइन एग्जाम है, मुझे यहाँ पे जाना है, तो हम खाना थोड़ा सा खा के या कुछ तो भी खा के निकल नहीं सकते। खाना खाते समय आपको पूरा खाना खाना है और आपका डाइट भी बैलेंस डाइट बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। हमारी बॉडी को कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कार्ब्स, फैट,
प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड लास्ट में वाटर। अब हम बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के कुछ रिसोर्सेज की। कार्ब्स। कार्ब्स दो टाइप के होते हैं, बैड कार्ब्स एंड गुड कार्ब्स। हमें एक हेल्दी लाइफ के लिए गुड कार्ब्स को लेना चाहिए एंड गुड कार्ब्स के कुछ बेस्ट रिसोर्सेज हैं स्वीट पोटैटो, ओट्स, बीन्स एंड बेरीज। उसके बाद आता है फैट। फैट के भी दो टाइप है, बैड फैट एंड गुड फैट। बट ऑब्वियसली हमें हेल्दी लाइफ के लिए गुड फैट चाहिए होता है एंड गुड फैट के कुछ रिसोर्सेज हैं कोकोनट ऑयल, फ्लैक्सीड, वॉलनट एंड पीनट बटर। कार्ब्स एंड फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमें डे टू डे एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन के कुछ बेस्ट रिसोर्सेज हैं ब्रोकली, एवोकाडो, स्पिनच, डेयरी प्रोडक्ट, चिकन, एग। प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग एंड मसल रिपेयर में काफ़ी हेल्प करता है और ये हमारी बॉडी ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की। वाइटामिन एंड मिनरल्स के कुछ बेस्ट रिसोर्सेज हैं फ्रेश फ्रूट्स, लीफी ग्रीन, टेबल सॉल्ट एंड सी फूड। वाइटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं डाइटरी फाइबर की। डाइटरी फाइबर के कुछ बेस्ट रिसोर्सेज हैं ब्रोकली, स्प्राउट्स, रास्पबेरीज एंड ओटमील। डाइटरी फाइबर हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है और ये डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में हमारी हेल्प करता है। ये कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए मस्ट नीडेड होते हैं। अगर हम इनको एक बैलेंस्ड वे में लेते हैं तो हम एक बैलेंस्ड डाइट को मेंटेन। तो ये हुआ हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के लिए बहुत सी जानकारी आपको हर जगह पे मिलेगी, किताब में है। लेकिन इस बैलेंस डाइट के बारे में आपको जानना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। सिर्फ इंटरनेट पे जाके निकालना नहीं है। हमें किसी भी न्यूट्रिशन डाइटिशियन होगा उसके पास जाना पड़ेगा। हमारे रिश्तेदार को, ये माँ बाप के उनके सामने भी चर्चा करनी पड़ेगी और बैलेंस डाइट कैसे होता है वो जानकारी रखनी है। जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपको लॉगबुक में दिखनी है। अगर आप वहाँ पे कोई चित्र भी जोड़ देते हैं तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चित्र के हिसाब से आपका जो जानकारी है वो और अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा। दूसरा है नो हाउ टू बाय प्रोविजंस एंड वेजिटेबल्स एंड ड्रॉ प्राइस्ड एंड डायरेक्टली साउंड मेन्यू टू इंक्लूड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर ए कैंप ऑफ ए वीक ड्यूरेशन फॉर एटलीस्ट वन पेट्रोल ऑफ 6 स्काउट्स और गाइड्स। 6 बच्चों के लिए, 6 स्काउट या 6 गाइड के लिए हमें एक वीक कैंप के लिए, वीकेंड नहीं वीक कैंप के लिए हमें अगर सामग्री इकट्ठा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा और उसके लिए कितना प्रोविजन और वेजिटेबल्स बाजार से लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं, हमें मालूम है कि अगर हमें प्रोविजंस लेना है, वेजिटेबल्स लेना है तो हमें बाजार तो जाना ही पड़ेगा। तो बाजार जाना है तो अकेले ही जाए क्या? नहीं, आप अपने माता पिता के साथ, अपने पेट्रोल लीडर के साथ, अपने यूनिट लीडर के साथ एक बार बाजार का चक्कर लगाइए। क्या चीजें कहाँ पे मिलती है वो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि सब्जी कहाँ मिलती है, मसाले कहाँ मिलते हैं, प्रोविजंस कहाँ मिलते हैं, या आपके घर का भी सामान आप जहाँ पर जब लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी आपका एक फैमिली शॉप होता है। वहां का भी जो शॉपकीपर होता है वो आपको जानता है, आपके माता पिता को भी जानता है, आप भी कभी गए होंगे तो उस दुकान पे जाके आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। अगर सब्जी लेना है तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा एक चॉइस है। ये देखो, ये है गांव का बाजार। हर एक गांव में छोटा छोटा बाजार लगता है, एक दिन के लिए होता है, कभी संडे में होता है, कभी मंगल के दिन होता है। उस बाजार में ना ये सब्जियां बहुत सस्ती मिलती है, तो वो बाजार में भी आपको एक चक्कर लगा के आना चाहिए और उसमें वो सब्जी कैसे नाप तोल दिया जाता है और कितना कम पैसे में दिया जाता है वो आप देख सकते हैं, और वहां पे भी बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको सभी चीजें देखनी है। पर ये प्रोविजन कहाँ मिलता है, वेजिटेबल कहाँ मिलते हैं, मसाले कहाँ मिलते हैं और बाकी चीजें जो होता है, दूध वगैरह जो होता है वो कहाँ मिलता है वो देखना है। क्योंकि आपको कैंप पे जाना है तो जो चीजें आप लेकर जा सकते हैं या खरीद सकते हैं वो आपको सही तरीके से कम पैसों में लेनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको एक डाइट मेनू चार्ट बनाना है।
मेनू चार्ट बना के आपको 6 दिन में आप क्या खाना चाहते हैं, कौन कौन सा खाना बनाना चाहते हैं, वो एक मेनू चार्ट आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। और डे टू डे आपका मेनू चार्ट जो है वो आपने प्रिपेयर कर लिया, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन सी वेजिटेबल चाहिए, कौन सा प्रोविजन चाहिए, उसका भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो डाइट मेनू चार्ट इज द मस्ट। वो आपके पेट्रोल में जितने बच्चे हैं उनको फेवरेट क्या क्या चीजें चाहिए और वो हम क्या कैंपिंग में क्या क्या बना सकते हैं उस चीजों में से, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पेट्रोल में मीटिंग लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको डे 1 से लेके डे 7 तक या 6 तक आपको अपनी मेनू चार्ट बनानी पड़ेगी। अगर मेनू चार्ट बना लिया तो आपको मटेरियल का लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, कौन कौन से मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल के लिस्ट के हिसाब से कितने क्वांटिटी में चाहिए वो भी आपको बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक बच्चे के लिए दिन में कितना खाना चाहिए, कितना आटा लगेगा, कितना राइस लगेगा, कितना वेजिटेबल लगेगा, वो अपने खुद के हिसाब से आप निकाल सकते हैं और वो उसका एक चार्ट बना सकते हैं और उसको 6 बच्चों के साथ मिला सकते हैं, इंटू 6 कर सके। और उसमें क्या क्या खाना बनेगा वो भी देखना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। अगर मिड मॉर्निंग और मिड आफ्टरनून में भी आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहते हैं और खाने की जरूरत तो है ही, तो वहां पे भी क्या क्या खाना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाएंगे हम, क्या चाहते हैं वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और कुछ जगह पे ठंडी ठंडी जगहों पे बिफोर बेड भी हल्दी का दूध होगा, ऐसा कुछ चीजें होंगी जो हमें सोने से पहले लेनी है, गर्म पानी है, तो वो भी हमें सब तैयार करके मेनू चार्ट में रखना। और एक बच्चे के लिए इतना लगता है, तो बाकी 6 बच्चों के लिए, 5 बच्चों के लिए कितना लगेगा और 6 दिन के लिए कितना लगेगा, वो सभी लिस्ट हमारी बनेगी। तब जाके हम प्रोविजन स्टोर पे जाके उसका कीमत निकालेंगे, उसकी कुल राशि करके बाद में लास्ट में हमको 6 दिन के कैंप के लिए एक पेट्रोल के लिए कितना सामान खरीदना पड़ेगा उसका अंदाजा आएगा। उसके लिए आपके यूनिट लीडर, आपके का पेट्रोल लीडर, आपके माता पिता भी और प्रोविजन स्टोर वाले या शॉपकीपर, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा और इस तरह से लिस्ट बनाना पड़ेगा। देन जो चीजें हमने अभी कबूल के सिलेबस में देखी वही है कि कुकिंग प्लेस बनाना, डे एंड लाइट फायर करना, तैयार करना और फायर जलाना, और 5 लोकल डिशेस, स्टैंडर्ड डिशेस आपको बनानी आनी चाहिए या बेवरेज बनाने आनी चाहिए जो एग्जामिनर बताए। एग्जामिनर ने डिसाइड की हुई कोई भी 5 चीजें आपको बनानी आना चाहिए। तो ये जनरल हम देखेंगे, एक छोटा सा वीडियो पहले देखेंगे जो एक स्काउट ही आपको दिखा रहा है। वीडियो थोड़ा बड़ा है, मैं थोड़ा Okay, so welcome to the episode we're going to do on fire making in the desert. All the effort in to maybe whether it's with a friction fire or burn drill or whatever it is, you know, to get a little heat and an ember and or a spark or whatever it is, and then you haven't got the rest of the fire ready to go. So preparation is key. If you're in wet climates, get cover, get out of the wind. Starting fire in adverse, first of all, is heat. You got to have a heat source, and you can generate heat in many ways. You can generate it from the heat of the sun. You can generate it through friction. You got to have that heat. Second, you need oxygen. You've got to have oxygen to allow that flame to ignite. And thirdly, you need fuel. Okay, something that's actually then going to burn. If you starve a fire of any of these 3 elements, it's going to go out. So if you've only got oxygen and fuel, you know, we've got oxygen and fuel here, there's no fire. You know, you've got to have all 3, heat, oxygen. It's going to take that initial spark or that initial focal point of heat or that initial ember. It's the first point of contact for fuel, for heat, that you're going to start your fire with. You want this to be as... Without good tinder, you're never going to start a fire. If you try and start a fire straight onto bigger fuel like this, it's just not going to burn. You know, you have to build your way up. When you're in a desert environment like this, that's easy because everything is dry tinder.
then you need good kindling, and again smaller, like I always think the size of your little finger is a good indicator, this sort of stuff. And again, a good way to judge whether kindling is good to burn is to break it, and if it sounds like the crackle of a fire, once you've got your kindling going, you need a bigger fuel. Anything bigger, logs, you know, one of these would be great. Here, ultimately, if I was spending the night here, you know, I know I'd build a fire, that initial fire, and that is the part that is always tricky. People spend days and days and days as a group trying to start fires. You know, it's hard. If you don't do it and you've never been taught it, it's hard. But there are many different ways of doing it. I'm not going to go into... First of all, imagine one of your team has got some glasses. You can use the broken glass or the actual glass lens themselves to focal the sun into a narrow point and generate heat. Dark glasses aren't going to work, but if we use one of the glasses here, one from the crew. Okay, so look, glasses like this, and you can see, look at my hand there. Tinder, the tinder's going to ignite, and then we've got to be fast and we've got to be ready with the kindling. The final thing I'll say before we actually light this is build your fire off the ground. Many times I've tried to start fires in swampy areas, and if it's just wet underneath, it's going to put the fire out. So build it up a little bit. तो आपको ये खुद करना पड़ेगा, और आप जब बनाएंगे फायर, जब जलाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लगती है। किडलिंग जो होता है, छोटा जलने की चीज़ होती है, वो आपको इकट्ठा करके रखनी पड़ेगी कैंपिंग के पहले। उसके बाद छोटी छोटी लकड़ी, उसके बाद बड़ी लकड़ी, वो कैंपिंग के लिए चाहिए। हम खाना जो बनाएंगे उसके लिए जो चूल्हे इस्तेमाल होते हैं, उसमें से कुछ चूल्हे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये मगन चूल्हा है। उसके बाद ये ट्रेंच फायर है जो कैंपिंग में इस्तेमाल होती है, गड्ढे में जो फायर की जाती है और उसके ऊपर खाना बनाया जाता है। उसके बाद एक फायर का तरीका अल्टार फायर। जब गीली जगह पे हो, आप कीचड़ में हो या किसी गीली जगह पे आप लकड़ी रख रहे हो, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। समुद्र के किनारे पे ये फायर जलाइए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। अभी आपको जो लोकल डिशेस बनानी है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि आपको सिर्फ बताना है कि ये डिशेस कौन सी। तो चलिए देखिए, पहली डिश होती है जो सबसे फेवरेट है, सबकी फेवरेट है, सभी जगह पे चलती है। ये है भजिया, और उसको पकौड़ा भी बोलते हैं। ऐसी भी डिश आपके एग्जामिनर ने अगर बताई तो आप बता सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद है ये हमारे मुंबई की बहुत फेवरेट डिश। आपको मालूम है कौन सी है वो? शायद लास्ट में हम देखेंगे उसके बारे में आप क्या कहते हैं। और वो है वड़ा पाव। तीसरा है जो बहुत ही फेवरेट है, कैंपिंग में उसको किया जाता है, ये लोकल डिश की तरह, या और बहुत जगह पे खाया भी जाता है। ये है पनीर टिक्का। ये जो वेजिटेरियन जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और नॉनवेज लोग भी खा सकते हैं, लेकिन उसका फायर पे ये करके रोस्ट करके खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये हमारा साउथ का है, और ये हमारी महाराष्ट्रियन डिश है जो आप बहुत ही जल्द अगर आपके पास फ्लोर सब तैयार है तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी डिश है जिसे कहते हैं हम थाली पीठ। ये डिश भी आप बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा वीडियो जो हमारे डिश का है।
इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, जो सर्व फूड इन ए प्रॉपर मैनर। फूड अच्छी तरह से हमको सामने लाना है और खाने के लिए तैयार रखना है। आज भी सभी जगह पे थाली के बजाय केले के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे जो चीजें रखी जाती है, खाने की चीजें, वो इस तरह से रखी जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओणम के टाइम पे जो चीजें बनाई जाती है वो रखी हुई दिखेगी। किस तरीके से रखी है देखो, क्योंकि खाना जो होता है, खाना खाने का जो तरीका होता है, वो जमीन पे बैठ के लेग क्रॉस करके और हाथ से हम खाते हैं। इंडियन जो परंपरा है, भारतीय परंपरा के अनुसार हम हाथ से खाते हैं। और मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि मोक्ष आयुर्वेदा में भी बताया गया है कि हाथ से ही पांचों उंगली से खाना खाना चाहिए। जो चीजें हमको जल्दी खानी चाहिए, ज्यादा खानी चाहिए, वो नजदीक है, और जो चीजें कम खानी चाहिए वो दूर है। तो ये है खाने के लिए हमारा जो थाली होता है या पत्ता होता है, वो किस तरह से सजाया जाए। इससे भी अच्छा आप सजा सकते हैं, क्योंकि खाना जो है तो पहले आंख से खाया जाता है। आप शायद हंसेंगे, हाँ, आंख से हम देखते हैं, बाद में हाथ से हम उसको टच करते हैं, नाक से उसका स्मेल लेते हैं, और बाद में हम मुंह में रखते हैं, तब उसका टेस्ट होता है। तो ये सब चीजें है खाने के लिए। तो हाथ से जो खाना खाया जाता है वो इस तरह से सजाया जाता है। तो प्रॉपर मैनर से आपको सर्व करना भी आना चाहिए। देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, स्टोर, हाउ टू स्टोर प्रोविजंस इन हाइजेनिक मैनर। तो वहाँ पे बहुत से तरीके हैं हमारे पारंपरिक चलते आ रहे हैं। उसमें ड्राइंग है, पाश्चराइजेशन है, कैनिंग है, शुगरिंग है, सॉल्टिंग है, पिकलिंग है, हीटिंग है, कूलिंग है, बॉइलिंग है, स्मोकिंग है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी तरीके हैं। आपको सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी, अपने घर से भी मिल जाएगी, और आजू बाजू में कोई फैक्ट्री होगी तो वहां पे भी मैं आप मिल सकता, आपको मिल सकता। कुछ चीजें हम देखेंगे। ड्राइंग में हम क्या करते हैं, हमारे घर के सामने चीनी पड़ी होती है और सुखाई जाती है, पप्पड़ पड़े होते हैं, सुखाए जाते हैं। ये ड्राइंग का तरीका है। हमारे यहाँ मछली, समुद्र के किनारे मछली भी ऐसे ही सुखाई जाती है। पाश्चराइजन ये तरीका जो होता है, जो हमारा रोज का जो दूध आता है, बोतल बंद होता है, उसको पाश्चराइजेशन किया हुआ होता है। सॉल्टिंग, सॉल्ट ये एक बहुत अच्छा चीज है जो एनिमल फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, उनको बचा के रखता है, उनको वैसे की वैसे फ्रेश रखता है। तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट डालने से बैक्टीरिया और अदर जो ये होते हैं वो नहीं, उसके ऊपर विकास नहीं होता उनका, और वो उस खाने की चीजों को अच्छा रखते हैं। पिकलिंग, तेल का तड़का दिया जाता है, और वो तेल का जो एक लेयर बनाया जाता है, उसके अंदर वो सभी चीजें रखी जाती है। अचार हम ऐसे ही बनाते हैं। तो अचार जब बनाते हैं घर में, तब आप ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पिकलिंग का तरीका इस्तेमाल कैसे की इस्तेमाल किया जाता है वो। बॉइलिंग तो हमें जानते ही, हम दूध को रोज बॉइल करते हैं सुबह शाम, क्योंकि उसको अगर 2 दिन चलाना है तो आपको बॉइलिंग करते रहना है। कूलिंग, फ्रीजिंग, ये आजकल के मॉडर्न तरीका है। उसमें खाना जरूर उसका अच्छा रहता है, लेकिन बहुत दिनों के लिए रखा हुआ खाना हमने खाना नहीं चाहिए। उसके बाद शुगरिंग, जैसे सॉल्ट डालते हैं वैसे शुगर से भी आप खाने को सेव कर सकते हैं। और कुछ तरीके हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। लॉग बुक, उसके बारे में 2 मिनट में मैं बताऊंगा आपको कि लॉग बुक जो है, उस लॉग बुक में यहाँ पे जो दिखाया गया 1, 2 एंड 5, ये जो इंफॉर्मेटिव चीजें है उसके बारे में आप जितनी जानकारी इकट्ठा करोगे वो आप लिखेंगे उसमें। लेकिन 3 एंड 4 जो है वो एक्टिविटी है। वह एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी के बारे में आपको वो एक्टिविटी करके दिखानी पड़ेगी, या आपको एग्जामिनर जैसे बताएगा उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, और उस काम का जो रिकॉर्ड है आपको रखना पड़ेगा। तो ये हमारा कब बुलबुल और स्काउट गाइड के लिए था ये टूर बैच। इस बैच के लिए, इस प्रोफिशिएंसी बैच के लिए मुझे जानकारी देने के लिए चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी सहभागियों के भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने 100 के ऊपर प्रेजेंटी दिखाई है। बहुत अच्छा लगा, और फेस टू फेस नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो मेरा सेशन है आपके ध्यान में आया। थैंक यू वेरी मच।
Yes, sir. Thank you very much for your wonderful sessions. I think now all our audience part who are attended in a webinar and in YouTube also. YouTube, who those who are watching YouTube, everyone got a clear picture about our proficiency pad. And now it's time for a queries part. Dear participants, if you're having any queries, you can come up with your queries in chat box. Our resource person is there with us to clear our doubts and all, and the chat box is open for you. Please go ahead. I think no questions, no queries from participant side. Yes, if you don't Yes, have yes. any queries, you just give your opinion about this particular session, your compliments, opinions, views, whatever it is. We are ready to take all those. Yes, we are getting very positive response. Yes, well explained. So no questions. Very exactly. Wonderful sessions. Congratulations. Yes, sir. We are getting very positive response. Sir. Prashant, sir. We heartily congratulate you from our team. Thank you. Yes, sir. So now, participants, it's time for the knowledge testing. So I think most of you have been guessed what I'm saying. Yes, it's time for quiz, and it's gonna be super excited with your participation. So hello, friends. Don't move here and there, and get stuck to your screen so that you won't miss opportunity to be the winners of our leaderboard. So just go and check the comment section box for the quiz link that is Slido, and click on that and register with the rapid movement with your name, and there will be limited time for the opening link. Yes. Yeah, here we go. Register yourself, and the link is uh, updated in the chat box. You just register with your particular details. And if you're not able to connect to the link, there is also our yeah, we are getting many, but 32 participants were there. If you're not able to join through the link, there is QR code. You can scan that QR code and you can enter into the quiz session. Yes, that's good number 42. We can wait for some more participants. Yeah, you guys are so interested to take part in this particular quiz part. 49 participants up till now. Yeah, it's 50. So 52. 55. I request the viewers who are watching live in YouTube also can take part. Yes, we are having a good number of participants. Yes, the first question is, which is the main source of energy of a human body? And the option is protein, option B, vitamins, C, minerals, D, carbohydrates. And the countdown is 18, 17, 16, 15, 14. And the last 5 seconds. Yeah. 3, 2, 1. Time's up. And the right answer is D, carbohydrates. So most of the participants went for carbohydrates. Only 50% of the participants answered for the correct answer. Yes, congratulations for them. And the next question is, which nutrient helps keeps your bones and teeth strong?
Option A, protein. B, vitamins. C, minerals. And D, the carbohydrates. And Arya and 32 participants were answered till now out of 59. We are having 59 participants till now. And the last 5 seconds. Yeah, 4, 3, 2, 1. Time's up. Yes, the correct answer is B, vitamins. And C is the correct answer. Only 26% of participants have answered for that. Congratulations for the correct answered participants. Yes. And the next question is, which helps your body to fight against diseases? And the option is protein, vitamins, minerals, and carbohydrates. And the good part is our participants number has been increased for this quiz. 64 were under now participating in this quiz, and out of them 50 were completed in the last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Yes, is the leaderboard. And the correct answer is B, vitamins. Yeah, maximum number of participants were answered the correct answer, 55%. Congratulations to everyone. The next question is, which nutrient helps in digestion, removes waste, and regulates body temperature? The options are like fats, carbohydrates, water, and saturated fats. And the time is getting very faster. Yes. The last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Time's up. Yes. The correct answer is water, C, and 78% of participants answered the correct answer. Happy congratulations. I think you are well known with the science part. And the next question is, grains are a good source of proteins, carbohydrates, sugar, and water. Yes. It's 40 participants were answered till now. 47. Yes, the last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Yes, the correct answer is carbohydrates. Maximum number of participants were answered the correct answer. The next question is, how does calcium help our body? Options are builds muscle, helps eyesight, develops red blood cells, builds strong bones. Yes, 49 participants. I think this question is well known for each and every one of us. And the last 3 seconds. 3, 2, 1. Time's up. Yes, option D, 85% is the correct answer, and most of the people answered the right answer. And 7th question, 1 calorie equal to how many joules? 1 calorie equal to how many joules? Option A, 4.184 joules. Option B, 4,184 joules. Option C, 41.84 joules. Option D, 418.4 joules. It's a little bit tricky, but let's see how it goes. Yes, option A, maximum number of participants have been answered. Let's wait for the correct answer. Yes, maximum number of participants answered the right answer. Congratulations for them, even though the question is tricky, but you tried well. And 8th question, how many calories should a normal man have? Options are 200 calories, 2,500 calories, 1,500 calories, 3,000 calories.
Yes, it's a little bit easy question, but let's see how our participants goes on. Yes. And the right answer is yes, 2,500 calories. And most of the participants answer the right answer. Yes. Hearty congratulations for all of them. And then ninth question. What are the symptoms of protein deficiency? Options are wasting and shrinkage, anemia, slow growth in children, and all the above. All the options A, B, C. Yeah, protein deficiency. Yeah, we can see this in most of the people all around us. So let's see what it leads to be. 6 participants answered, and 65% were answered all the above. Let's wait for the correct. Yes, yes, all you are right. All the three: wastage and shrinkage, anemia, and slow growth in children. These all three causes due to protein deficiency. And the last question is: which vitamin or mineral allows the blood to hold oxygen? Yes, options are calcium, iron, vitamin A, and vitamin D. Yes. Which vitamin or mineral allows the blood to hold oxygen? Yes. Most of the participants were trying because the number is increasing slowly. Only 59. The last 2 seconds. Yes, let's wait for the correct answer. Oh, 66%. Yes, exactly. You are right. 58 out of 69, 58 participants were answered correct answer, and congratulations for all of them. And we can see the leaderboard result, please. Yes, Mr. Yogesh Kumar. His average timing is 37 seconds, and Mr. Amit Kumar 46 seconds. Shaurya Patil 1 minute. Kanika 1 minute 2 seconds. Atul Singh. Okay, he answered only 9, but his timing is very quick. So 1 minute 15 seconds. So hearty congratulations for all of you guys. Yes, I hope you all enjoyed the quiz. So what is your main opinion about this quiz? Is it useful or not? Can we have your views in the chat box about this particular quiz part? How you enjoyed? Yes, very useful. Thank you. Very knowledgeable, absolute. Thank you very much. Super. Yeah, we are getting very positive responses. So actually, we are happy to make you happy. Thank you very much. And yes, we can have. Yeah, actually, that was a wonderful quiz because the wonderful participation by our wonderful participants and your comments in the session below itself displaying that how much you all have enjoyed and have a great learning with this brainstorming board. So now it's time to invite Devashmita Chatterjee, who is the winner of webinar 14, which is the last webinar. And a little introduction about her is she joined in scouting in 12th September 2011 as a Bulbul after completion of Golden Arrow Bulbul Award, and she stepped into guiding. And from guiding section, she completed a state level Rashtrapati course. And from previous year, she started making her new path as a new ranger. Yes, all the best, Devashmita, and I heartily welcoming you to share your views. Myself, Devashmita Chatterjee, Ranger of the Bharat Scouts and Guides Traffic Group Asansol. As I started my scouting life since young age, scouting always fascinated me. And if I say about this webinar session, that it's itself a masterpiece. In our scouting course, we used to complete our proficiency batches, but for time availability, we can't complete all the batches we have in APRO. We can only work on the batches as per syllabus. So through this webinar, we come to know more and more about proficiency batches and more about our scouting youth force and upskill ourselves.
So that's all I want to say. Thanks to all panelists and hosts and all others to give me this much knowledge and giving me this opportunity. Thanks a lot. Yeah, thank you very much, Devashmita. Thank you so much. And now I will invite Mrs. Vijaya Deka, Ranger Leader and Vice Principal of Jawaharlal Nehru College from Assam, who is a regular attendee of the series, going to give her feedback on the webinars. Heartily welcoming you, ma'am. Yes. The positive mindset brings positive things. Thank you, sir. Scouting begins to all. I am Vijaya Deka, Ranger Leader, Assam. I am delighted. I have attended in the series of webinars upskilling our nation's young workforce, skill in nationwide, organized by Bharat Scout Guides Missionary Headquarters and conducted by Northeast Region. This series of webinar is very interesting, valuable, and informative. It gives us ample opportunity to upgrading our knowledge and also keep up our scouting spirit. All the topics of the webinar series are helpful and beneficial in our scouting and day-to-day life. Though all topics have had great importance in our practical life and present society, I would like to specify some topics that is skill of leader and leadership styles, time management, skilled youth, nation pride, proficiency-based nutrition educator, scouting guiding life skill for social adjustment, team building and management, proficiency-based computer awareness, journalism, health humane, proficiency-based ambulance man and ambulance base, etc., which are very essential to become a skillful and competent in the age of global society. I highly appreciated all the resource persons participated in the series of webinars for their motivational lectures, interesting videography, through which we became highly motivated, acquired valuable knowledge, helped us to make our conception clear, and enhance our knowledge and skills in these respective fields, which is also very much interesting, motivating for of webinar. Especially, I have learned some new methods and techniques regarding presentation of the topic to make learning joyful. I believe that the series of webinars have great impact on each participant and work as a catalyst for upskilling our nation's young workforce and the new generation for building up healthy nation. I want to share my knowledge and experience to my team members and other friends. I acknowledge my sincere gratefulness to the Honorable Assistant Director, Sri Olanandu Sharma sir. He is a dynamic leader and great source of motivation for giving me the opportunity to share my views. Thank you, sir. Thank you all. And over to you. Yeah, ma'am. Thank you so much. Actually, you memorized all the sequence of webinars which we have been gone through all over the from past few months. So it's a very glad moment for all of us. Yes, now we have reached to the end of our webinar.
And it's time to thank you all, for which I cordially invite Mrs. Pushpa Sandilia ma'am from Chhattisgarh to deliver both of thanks. Thank you, Vedanti. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all dignitaries who have witnessed it as memorable and successful event. Today, my words are not enough to express the gratitude on behalf of BSG. I would like to thank our resources speaker, Mr. Prashant Gaikwad sir, who graced with his knowledge. I would like to thank pillar of this event, Mr. Analen Sharma sir, for all word of wisdom that radiated a source of energy within us. We thank you for being with us. Heartfelt thank goes out to Mr. Krishna Swami sir, who are our second parent, who always stand by us, guide us, lead us, and motivate us. We're proud and thank you for making us feel happy with your presence to this event. I also thank to the officials who work behind the scene to execute this event. Deep sense of thanks and appreciation goes to all the panelists, attendees, viewers in YouTube channel who had attended the webinar. Enthusiasm made today's event a great success. Last but not the least, let me thank to MC and ITT for his technical support. In the end, thank you all for being us today. Have a wonderful day ahead. One important notice is that you have to fill the feedback for this webinar in the feedback form, whose link will be given in the chat box. Must send it by Monday and make sure that your UID is correct. Thank you. Over to MC. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, participants, as ma'am said, don't forget to fill up the feedback form with, and the feedback form will be open till next Monday. And this is the most important part, that we had to prove that you have been in the webinar. So don't neglect to fill the feedback form. And now I request everyone to stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे